Hello, friends. So today we are going to see how we can write a program in which we can sort numbers. Uh, जैसे कि हमारे पास एक array होता है, उसमें हमारे पास बहुत सारे numbers होते हैं of a particular data type. So in this program we will see how we can sort an unordered list of numbers, an unordered array of numbers. For example, अगर हमारे पास एक array है उसमें numbers हैं, for example 34, 56, some numbers are there in an array. So हम देखेंगे इसको कैसे हम sort कर सकते हैं. As we can see, there are 1 2 3 4 5 6 7 8 elements in this array. Suppose this is an array of 8 elements, and in this array we have an unordered list of numbers. Those are not ordered, sorted. ये एक अनसॉर्टेड लिस्ट है नंबर्स की. सो अब हम इसको सॉर्ट करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर. तो इस प्रोग्राम में वी विल सी हाउ वी कैन सॉर्ट दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर. इसमें हम क्या करेंगे इस प्रोग्राम में, इसका लॉजिक क्या है. द लॉजिक इज वी कंपेयर फर्स्ट टू एलिमेंट्स. हम ये दो एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं. इफ दिस इज ग्रेटर देन और लेस देन द अदर नंबर, वी इंटरचेंज दीज टू नंबर्स. हम इनकी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल ये दो पेयर हम लेंगे 15 और 47, या फॉर एग्जांपल 98 एंड 15. 98 is bigger number than 15, so these two numbers need to be interchanged. इनकी प्लेस हमें स्विच करनी है, इंटरचेंज करनी है. तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करते हैं इस प्रोग्राम में. एक टेम्परेरी वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं. what this temporary variable does, it holds this number temporarily, and with this temporary variable we interchange the position of these two numbers. So what happens, this 15 comes at this place and 98 comes at this place. So and the position of these two numbers is interchanged. Similarly, यही लॉजिक हम फॉलो करते हैं थ्रू आउट दिस लिस्ट. जहाँ पे भी हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, अब ये दो पेयर है, कंसिडर दीज टू पेयर ऑफ नंबर्स, दिस पेयर ऑफ नंबर्स फॉर एग्जांपल. सेम सेम वाज केस हियर. जो केस यहाँ पे था वो केस यहाँ पे भी है. 47 बड़ा है, 2 छोटा है. तो इन दो की भी पोजीशन हम इंटरचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्परेरी वेरिएबल. This temporary variable called temp, it holds this value temporarily just to so that we may be able to switch the position of these two numbers. So now हम programmatically देखेंगे how we can write this program. For example, इसके लिए हमें एक array चाहिए. For example, मैं एक array डिक्लेयर करता हूँ. इसका नाम मैंने रखा है ARR of 10. Suppose it will hold 10 elements, this array. So I declared an array of 10 variables, 10 elements it will hold, and I need loop variables I and j and temporary variable. So जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है मैंने वो डिक्लेयर कर ली है. एक एरे मुझे चाहिए, एक लूप वेरिएबल दो मुझे चाहिए. आई नीड टू लूप वेरिएबल्स. यू विल कम टू नो व्हाई आई नीड टू लूप वेरिएबल्स and one temporary variable. So now we will present the user a message to enter the array elements. Enter array elements. So we will write \n so that the cursor comes to the next line. So user gets the message to enter the array elements. Here we have to enter 10 elements. This array holds 10 elements. अगर हमें एक ही element enter करना होता तो हम सीधे scanf कर लेते, लेकिन हमें 10 elements input करने हैं. For that we need a loop. We need to use a loop so that we may be able to enter 10 elements in this array. So I will use a loop. Loop size is 10, array size. Now I will input variables, elements, array elements one by one.
So here I have inputted, मैंने input किए हैं 10 elements इस array में. So now we will display the elements that we have entered in the array. I will print a message. हम चेक करेंगे जो हमने एलिमेंट्स एरे में एंटर किए हैं वो एरे में स्टोर हो गए हैं या नहीं हुए. We will print those elements. सो जिस तरह मुझे एरे इनपुट करने के लिए लूप यूज़ करना पड़ा, इसलिए इसी तरह मुझे एलिमेंट्स डिस्प्ले करने के लिए भी लूप यूज़ करना है, बिकॉज वी हैव 10 एलिमेंट्स हियर. Here I will use \t so that when जब ये एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे इनके बीच में थोड़ी सी गैप रहेगी, ये जिससे हमें क्लियरली विजिबल हो ये एलिमेंट्स. आई विल यूज \t हियर. सो पहले हम इतना प्रोग्राम रन करके देखेंगे. वी विल सी वेदर द प्रोग्राम रन्स अप टू दिस पॉइंट, हाउ इट विल रन. Here we have this message, enter array elements. Suppose I will enter 10 elements I have to enter. Here I have entered 10 elements. As you can see, the elements are displayed in this unorganized manner, unsorted manner, because we have not sorted the elements yet. Now what we will do, now we have to sort the elements. Now we will write the logic. Here I will print a message, \n. And now sorting, and again \n, so that the cursor comes to the next line. Now we will write the logic for sorting the elements. जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, हम कैसे लॉजिक में हमें क्या लॉजिक यूज करना है. सपोज these two elements we will take example of these two elements. The first element is bigger, the second element is smaller. Since we have to sort the elements in an ascending order, we need to interchange the position of these two elements. So we will use a temporary variable. With this temporary variable, we will swap the position of these two variables. We will interchange the position of these two variables. Similarly here, and similar is the case with these two elements, and these two elements, and these two elements. We will use, every time we will use this temporary variable, so just to interchange the position of these elements so that the list will be sorted in ascending order. So अब हम देखेंगे हम कैसे इसको करेंगे. In this we have to use two loops. In this logic we have to use two loops, one for this and another for this. I will show you in the program itself. For array size is हमने रखा है array size 10. This is the first loop, I loop, and now I will write second loop, j loop. Now we will write the logic. अब हमें लॉजिक लिखना है. if array of I less than array of j, if array of I is less than array of j, if one element is less than the other element,
then we need to interchange the position of the elements. So for that, we will use the temporary variable that we have already declared. Temp is equal to, this is the logic to swap the contents or position of two elements. Temp is equal to array of I. In array of I, I will put array of j, array of j is equal to temp, and this is this for loop. So now we will come out of this in this nested for loop. So here in this logic, I have swapped the contents of two variables whenever we have one pair of elements in which one is bigger and the another one is smaller. So with this logic, we interchanged the position of those elements. So just to sort the elements in ascending order. So now the elements are sorted. Now next thing we have to do, we have to display the list, this array in sorted manner. As it has been already sorted with this logic, now only thing we have to do is to display it. So I will write a message, the sorted elements are here. I have to use again a loop. Now I have to simply display the list, display the array. Again I will use \t so that there will be some space between the elements displayed. So now I will run this program and let's see how it will work. So it's asking me for enter array elements. Suppose I will give random element. Suppose 98 as first element, second element 2, third element, fourth element, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th element. So here we can see this is the list of elements that I have entered. So this one is displayed as it is, unorganized, unsorted manner. After that, what we did, we sorted the elements here in this logic. We sorted the elements here. Now sorting message is displayed and we sorted the elements. As we can see, now the elements are displayed in a sorted manner, in ascending order. The elements are displayed in ascending order in a sorted manner. करेक्ट. सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा इसका लॉजिक, हम कैसे एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं, हाउ वी सॉर्ट द एलिमेंट्स in ascending order or descending, either in ascending or descending order. If we have to sort the elements in descending order, just put a greater than sign here. It will display the elements, it will sort the elements in descending order. So that's it, friends. If you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe to my channel so that you can see my further videos. Thank you.